टॉप रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, आप काफ़ी समय नहीं रहे चोट की वजह से, उसका ओवरऑल कोई इम्पैक्ट देखते हैं इस मैच में? आपके नहीं रहे तो नहीं, देखिए, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली लेनी चाहिए फील्ड में, और हमारे सब प्लेयर्स वो करना चाहते हैं। कंडीशंस थोड़े ऐसे थे फर्स्ट इनिंग में कि इतना आसान नहीं था बॉलर्स के लिए। पिच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खेला पहले 2 इनिंग्स में, और सेकेंड इनिंग्स में ऑब्वियसली उन लोगों ने अच्छी बैटिंग करी तो ड्रॉ हुआ मैच। लेकिन जहां हम थे पहली इनिंग के बाद 450 स्कोर था, 320 पे 6 थे हम लोग, वहां से 600 रन बनाना एक बहुत मुश्किल काम था, और हमने अपने आप को जीतने की पोजीशन में डाला। तो हम सोचते हैं कि हमारा वो बहुत अच्छा एफर्ट था इस गेम को विनिंग सिचुएशन में लाने का। लेकिन अगेन, आप अगर नंबर 2 साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आके फाइट दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग आउट हो जाएंगे। तो देखिए, अपना अपना नज़रिया है। हम लोग ऑब्वियसली अपने पॉजिटिव्स देखेंगे, और हम उस चीज़ से खुश है कि हमने गेम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया एक ही इनिंग में, और दूसरी बार हमें बैटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और उन लोगों को ड्रॉ के लिए खेलना पड़ा। तो जैसे मैंने बोला, वो लोग अपने पॉजिटिव देखेंगे, हम लोग अपने पॉजिटिव देख के आगे जाएंगे, और एक मैच बचा है तो दोनों टीम आई थिंक पूरा जोर लगाएंगी लास्ट मैच में। थैंक यू सर। विराट, क्या विकेट में थोड़ा सा बुरी डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा बदला नहीं, और सहा और पुजारा और बॉलिंग एफर्ट्स के बारे में क्या करोगे? नहीं, विकेट मुझे नहीं लगता कि विकेट से हम डिसअपॉइंटेड थे। ऑब्वियसली जैसा विकेट ब्रेकडाउन होता है डे 3, डे 4, डे 5 में, वैसा हुआ। लेकिन आई थिंक बॉल का हार्डनेस जो था वो बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जब बॉल नया था कल शाम को तो बहुत ज़ोर से घूम रहा था रफ से। इवन सुबह काफ़ी मुश्किल था, ज़ोर से घूम रहा था बॉल। लेकिन बीच के सेशन में बॉल इतना हार्ड नहीं था, तो विकेट से वो पेस जनरेट करना मुश्किल हो जाता है एक बॉलर के लिए। और जब विकेट 5वें दिन पहुंच जाता है तो वैसे ही पेस कम होता रहता है। तो बाद में नए बॉल से हमने ट्राई किया, 1-2 विकेट मिले, लेकिन वो बीच का जो सेशन था वहाँ पे आई थिंक बॉल का जो हार्डनेस था वो आप एक फैक्टर कह सकते हैं। वरना मैं उनकी एफर्ट से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। 4 विकेट आउट थे लंच तक, और उसके बाद उन्होंने सेशन में बिल्कुल विकेट नहीं दिया, तो उनको क्रेडिट जाता है। जब 2 लोगों ने अच्छा खेला तो आपको क्रेडिट देना चाहिए, और हम वो समझते हैं। लेकिन हम अपने एफर्ट से भी काफ़ी खुश हैं। जडेजा की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी ये मैच में। सब बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट जडेजा मेरे हिसाब से स्टैंड आउट होते हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमी अगर आप देखें इस विकेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास बॉलिंग करी उन्होंने, और बताया कि वो नंबर 1 बॉलर क्यों जॉइंट हो गए हैं अश्विन के साथ। मैम, Sometimes I feel really bad for him that people don't understand his importance so much in this team, and what a valuable player he is for us. And he's the most composed player we have in the team. He's willing to grind for his runs. He doesn't mind batting under pressure. He likes to take a challenge of batting long. So he's someone like that is priceless to have in the team. And when the pressure situation comes, he always wants to put his hand up and play long for the team and hold up one end, which is, I think, a great quality in him. So, I mean, this season he's been outstanding. He's I don't know the number of runs he scored, but he's contributed, throughout, and he's not been spoken about or being the focus too much. But I think he deserves much more than that, and people need to stand up and take notice of what he's done this season. And he's been outstanding with the bat, and I hope he can continue, till the last Test match as well. thank you, ma'am. Virat, we saw in the first inning Ashwin didn't bowl for a very, very long time, from 20 to today also it seemed not bowling too many overs. I mean, is it injured, is something wrong with him, or is it just part of the plan, or what is it that is not been bowling that much in this session? No, there's nothing wrong with Ashwin. There's no problems as such. You obviously want to choose ends. Fast bowlers from the far end, if you talk about where we're sitting right now, were more effective, and spinners were more effective from the commentary end. And it obviously you have to understand where the game is placed and what bowlers you want to use. Whenever Jadeja came on to bowl,
picked up a wicket or two every 3-4 overs, and it was very difficult to change him at that stage because he was bowling in good momentum. So I think that was one of the factors. And in the second innings, he bowled quite a few overs. We used him from both ends, but as you saw, it was difficult for the bowlers to generate much from the pitch. Jadeja, you can leave him aside in this game because he really stood apart among all the bowlers. But I think in general, the bowlers found it difficult to make things happen from the centre of the wicket. And the key was to keep trying, and that's what Ashwin always does, and he put his best effort in both the innings. Thank you, sir. Sir? Yeah, go ahead. Just a word on Jadeja and Ashwin. They both have bowled over 4,000 deliveries this full season. How are you managing their workload? How many? 4,000 deliveries this season. I didn't know, that sounds a lot. See, obviously the physio and the Including the paces. see, again, we're gonna see how many games we want to play them in terms of the shorter formats, and going forward, if we have a hectic test season, because they are very valuable test bowlers for us. So that is the only way we can manage workloads, because during a game you can't think of the fact that he's bowled 3,000 balls in the season and I need to make him stop, because if you want to win a game you need to push guys. So I think it's different formats. When they arrive, that's where you manage workloads, and we're certainly going to look into it. We have done that in the past as well, and that's certainly going to be followed in future, because you need to maintain a core group of test bowlers that you need fresh all the time, and it's not a difficult thing to do, but yes, one should be aware of it. Thanks. Last five. Chetan? Virat, you mentioned about giving pacers a role played in the test match, and there's something that we've seen throughout the season, saw in the New Zealand series here as well. So is it a plus point? Is it a growing factor for your pacers that you can use them even on these wickets late in the test match on day 5? Even in Bangalore we saw Ishant and Page getting those wickets. How vital has that factor been in the season? It's very important for our side to use them in short bursts, come and attack the batsman, try to pick up a wicket or two in the spell if possible, but otherwise contain runs. So that's been the way that we've used them so far. But could be different in the next game. If the wicket's nice and hard, could be very different. You might see them bowling longer initially. So you never know. It's according